Good evening. Am I audible? Good evening, sir. Audible, sir. Okay. So, good evening, Gauri. So, before we continue with Plato, just 5-10 minutes on the result today. Now, on both sides, people who have cleared, people who have not cleared, let me tell you one thing. Deep down, you know whether you deserved it or not. जिन्होंने clear किया है, many congratulations to them. And I'm very happy that I was able to play a small part in you clearing. But there are some very good students which on any day I would vouch for my life for them to be clearing this exam without without even battling an eyelid. मुझसे पूछा जाएगा कि आप ईश्वर की शपथ लीजिए कि इस बच्चे का निकलेगा कि नहीं. आई वुड हैव टोल्ड 100%, बट दैट इज द नेचर ऑफ दिस एग्जाम समटाइम्स कि कभी जो है बहुत अच्छे बच्चों का कभी कभार रह जाता है. I'm really happy and I'm very grateful that some of you have sent your wishes to me for guiding you, etc. But I don't want to talk about that. For those people, I'll sit separately and start your mains preparation in full-fledged. But जिन्होंने भी नहीं किया है, you are equally dear to me, and I'm telling you, this was not your year. Otherwise, you very well deserve to be in mains this year only. Okay, so just 5 minutes on where we are clearing and we are not clearing. Yes, there are some people who are not clearing by a relative distance. आपको भी बुरा लग रहा है, I know, because you know it was in your grasp. आपको पता है कि नहीं ये मैं निकाल सकता था, तब तक भी बात ठीक है. Till the time you have realized that ऐसे थोड़ी बहुत चीजें हम बदल के एग्जाम निकाल सकते थे. For such people also, no need to panic. एक स्टेज में बात कर ही चुका हूं. There are some students whose result is really heartbreaking for me, because I know that they have put their blood, sweat and tear and they are really deserving. बहुत knowledgeable बच्चे हैं, and prelims is a very ruthless exam. Sometimes it punishes the undeserving. So for such students, please do not waste one day, even one day, in your mains preparation. आप अपने दिमाग में बस ये लगा लीजिए कि आप नेक्स्ट ईयर के अपने रैंक से उतने दिन घटा रहे हैं जितनी आप अभी तैयारी में वेस्ट करेंगे. अगर आप एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते, एक महीना नहीं पढ़ते, एवरी सिंगल डे विल बी फॉर यू टू गो फ्रॉम AIR 1 to wherever you are going back, because you are deserving. It did not happen this year. There are many cases people did not clear prelims once or twice and then they got rank 2, they got rank in top 10. You are in that stage. Please do not punish yourself for a small error that you have made while attempting the paper, or majorly sometimes it happens that CSAT does not uh, go as planned, etc. So for these category of people, please do not waste even one day. आप डिजर्व करते हैं, एंड आप ये मान के चलिए कि हम अगस्त में मेंस लिख रहे हैं. देयर आर सम पीपल हु हैव नॉट फिगर्ड इट आउट. उनको ये नहीं पता कि भाई क्यों नहीं निकला मेरा. फॉर यू इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. डेंजरस क्यों है? क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि हमारा इस साल अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है. तो उसके लिए हमको करना क्या है? देयर इज अ रेमेडी. आप जाके इस साल का पूरा पेपर आज देखिए, सॉल्व द पेपर, या फिर आपका पेपर सॉल्व होगा आपके पास, उसमें ऐसे कॉलम बनाइए: पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, मिसलेनियस.
यहां पर लिखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, यहां पर लिखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट। ये 3 कॉलम आपको आज ही जो है फिल करना है, बोथ फॉर योर पेपर 1 एंड बोथ फॉर योर पेपर 2। ठीक है, यस, फॉर बोथ दीज कैटेगरीज वन थिंग इज कॉमन, you should be restless, definitely restless. Okay, this failure is not a final stamp. So लेकिन हमको एक आग जलनी चाहिए आज ही, ताकि हम नेक्स्ट टाइम के लिए जो वर्क कर रहे हैं, वी आर वर्किंग फॉर दिस। ओके, फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट रेमेडी फॉर दीज पीपल हु हैव नो आइडिया कि भाई हमारा क्यों नहीं क्लियर हुआ, वो आप ये करिए फॉर GS1 एंड फॉर GS2 कॉम्प्रिहेंशन, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एंड सेम थिंग अटेम्प्टेड, करेक्ट, इनकरेक्ट, लेफ्ट। ये सेम चीज यहां भी करनी है आपको GS2 के कॉन्टेक्स्ट में। एंड देन come to me, let us have a remedy from tomorrow onwards only, let us start studying. Okay, for those who have cleared and those who are in this situation, immediately हमको मेंस के लिए gear up कर लेना है, मेंस at full force. In fact, people in this category should work even harder, because आपको ये मेंस की लड़ाई अगले साल लड़नी है, तो आपको उसमें that much consolidation you have to do. Plus people who are clearing prelims, once again I congratulate you, but don't be swayed by it. It's just, अभी तो क्या है, यूपीएससी इस लिस्ट में भी आपका नाम देने लग गया है, जब हम लोग देते थे तो फाइनल लिस्ट में ही एक बार नाम आता था। ओके, एंड आई रिमेंबर, आई टेल यू माय पर्सनल जर्नी। So I cleared prelims for the first time. My family was very happy. Are very good, very nice, etc. I wrote forest services mains. Not with a lot of interest, but simply like that. Then पहला मेंस भी लिख दिया, obviously नहीं होना था, मेंस was not ready. Then second prelims again cleared both, family was slightly happy. Third prelims cleared forest services, cleared mains, went to the interview. Now very happy family, interview चले गए, अब तो भाई ऑफिसर है, अब तो क्या है कि अब अधिकारी है, अब इसकी जो है उससे नीचे सोचना ही नहीं है। Did not clear, again wrote prelims. So that cycle is like this. अभी आप सिर्फ आप इस पीक पे नहीं पहुंच पाए हैं, हमारे लिए ये पीक होना चाहिए, आवर नेम इन द फाइनल लिस्ट। फॉर यू जस्ट कंसिडर दैट यू आर लकी टू बी असेंडिंग दिस लैडर टू रीच हियर। बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। देयर आर ओनली एंड ओनली टू स्ट्रेटजीज, रिवाइज एंड राइट, revise and write, revise and write. There is not no third strategy. Okay, so this is just my suggestion, and personally I made mistakes, that whenever at whatever stage, prelim stage it was not the case for me, but uh, there was at main stage and interview stage, so I wasted a lot of time in coming back to the studies. बहुत समय मैंने waste किया, a crucial period. And then my mentor used to ask me just one question, which used to bring me back into the preparation. And you should also ask the same question: do you have to give the next attempt? If the answer is yes, just forget about whatever the result has come after doing this exercise. अगर कोई भी इस कॉलम में है तो ये एक्सरसाइज करने के बाद इसको सबमिट कर दीजिए, एंड देन सिंपली गेट ऑन विद द प्रिपरेशन। ओके, so this is all. Let us now come back to more mechanical things, that is Plato. So why did Plato give allegory of cave?
Who will tell me? Yes. Why did Plato give allegory of cave? Am I audible? Yes. Yes. Why did Plato give allegory of cave? To differentiate between. Some of you are still processing the result. I understand that one. And it's, yes, it is really, really disappointing sometimes. But जब तक इस एग्जाम को निकालेंगे नहीं, तब तक डिसअपॉइंटमेंट को अपने आप तक रखेंगे. We will keep it to ourselves. We will keep it to our mentors. We will shield us as well as our parents. They have supported you a lot and they will keep supporting you. Don't take any decision in panic. Okay. कोई भी हम decision ले उसको हम plan करके ले. Generally what happens is we start taking emotional. Now job कर लेते हैं, attempt छोड़ देते हैं, अगला ये वो. कोई भी चीज मत कीजिए. एक ऑब्जेक्टिव अपना एनालिसिस कीजिए कि क्या मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ. इफ योर आंसर इज रीजनेबली यस, this is a beautiful exam, and take it from me, even if you don't clear in all the attempts, god forbid, you will be in a very, very good place in life, sometimes even better than people who are selected. Even that is the case. And those who are writing, आप पूरी अपनी ताकत लगा दीजिए कि इसी बार में एग्जाम निकल जाए, because the nature of prelims is such. Okay, so don't dwell on it too much. Yes, cry, weep, ask questions to god why this happened, but from my personal experience I'm telling you, his plan is much better than your plan for you. आज ये सब सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, but you, when you look back on this day today, you will repeat this and you will repeat my words that his plan was definitely better than the plan you thought for yourself. तो थोड़ा सा भरोसा करके उनके ऊपर एंड पढ़ना चालू कीजिए. तो एलेगरी ऑफ केव, विकास, why Plato gave allegory of cave? So to establish the difference between the Appearance this and one and the reality. Yes, appearance is the world around us and reality is the world of ideas. ideas. Now Plato also, when he gave this theory, any philosopher, when he gives a theory, should he not justify his theory? कुछ justification देना चाहिए या नहीं? Yes. 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 So Plato also gives some kind of justification, जिसको आप कह सकते हैं arguments in support of his theory of ideas. Okay, so what are the arguments that Plato gives for supporting the theory of ideas? Can you think of any argument? Yes. Anybody? Sharwani, any idea why, like how he would have given proofs for existence of God? Gauri?
Can you repeat the question? Like, how would he justify that ideas are the ultimate reality and ideas exist in kingdom of heaven independent of everything else? How would he justify this? Sorry, sir, I'm unable to recall it. Yes, Rituraj. So let us see. Okay. So Plato gives 5 arguments. First argument he gives is from knowledge perspective. ये बताइए नॉलेज का जो आधार है वो चेंजिंग होना चाहिए, शुड इट बी चेंजिंग, और शुड इट बी having definite certainty in knowledge. For example, this is an apple. ये तो ठ बन गया. इसका आधार क्या चेंजिंग होना चाहिए? अलग अलग जगह एप्पल जो है अलग अलग फ्रूट्स या अलग अलग पर्पस के लिए जाना जाएगा. और दिस इज एन एप्पल, शुड इट हैव अ डेफिनिट बेस? यस, Definitely. it should have a definite base. But can the things and beings of the world provide this definite base? If I say an apple a day keeps the doctor away, yeah, this apple is red in color. Will this apple look red to all of us? The other example, apple is nourishing. Will this apple be nourishing at all times and for everybody? No, sir. No. So that means this information, it is changing if we are basing its foundation to this perceptible world. But if there is an idea of apple which is constructed out of redness, roundness, sweetness, will that be common sweetness, etc. for all the apples? Yes. No, sir. No, it won't be. Acha, you are talking about that yellow apple. This will be the same for all the apples. Reason being, the idea of apple is fixed. Redness, sweetness, its particular shape, etc. That is what is the essence of the apple. That will remain the same. So knowledge, for knowledge to be possible, it should be based in ideas which are permanent. The things and beings of the world, they are changing. They cannot be the foundation of definite or permanent knowledge. Secondly, Ram is a man. Vikas is a man. Shyam is a man. How are we identifying all of them as men? Yes. Quality of manliness. Yes. Because all of them have the common and essential characteristic of manliness. Now, is this manliness present in Ram? Is it present in Vikas, or is it present in Shyam? Or should we say this manliness is an idea which participates in Ram, Vikas, and Shyam? Yes. What would be better?
So the manliness is an idea that is participating in all particular men. It is a universal according to which we are able to identify particulars. Okay. Then dinosaur. Does it exist today? No. Sir. No. But if dinosaurs are not existing today, can we say that dinosaurs did not exist ever? We have knowledge of dinosaurs, right? A particular dinosaur may not exist today. So knowledge of things which are no longer existing, they are still possible because of the idea of them. And fourth argument from relations. Neither Ram nor Vikas are exactly alike, but both of them we are saying is from the human race. Both of them we are referring to as men. We are able to derive relations between them. Why? Because both are participating in a common idea, that is manliness. So this relation is also coming from an idea. बाद में हम इस relation को criticize भी करेंगे from third man fallacy, which he himself will be criticizing. Okay, so these are the arguments that Aristotle himself gave. However, there are definitely challenges that you can raise or arguments against Plato's theory of ideas. अब arguments against में दो set of arguments हैं. One, Plato's own critique. प्लेटो खुद क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को या अपने थ्योरी को, या प्लेटो प्रीएम्प्ट करते हैं some of the criticisms that may be raised against his philosophy. The second criticism comes from his disciple, that is Aristotle. Aristotle will also be giving two sets of criticism. One on Plato's conception of ideas and on Plato's theory of ideas. एक वो कहेंगे कि आपका आइडियाज का कॉन्सेप्ट ही गलत है, दूसरा वो कहेंगे कि आपकी थ्योरी ही गलत है. कभी यूपीएससी पूछती है एरिस्टोटल्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोनियन आइडियाज, तब आप ये लिखेंगे. कभी यूपीएससी पूछती है एरिस्टोटल्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज, देन यू विल बी राइटिंग द सेकंड पार्ट. Now let us see Plato खुद अपना क्रिटिसिज्म कैसे करते हैं और how does he envisage his own criticism. So ये जो है अपनी एक किताब में एक कॉन्वर्सेशन करते हैं. ओके, इन हिज वर्क पार्मेनाइडिस. अब पार्मेनाइडिस इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ सोक्रेटिस. सोक्रेटिस से ये पूछते हैं, सोक्रेटिस से सवाल रेस करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहली क्लास में बताया था प्लेटो इन रेवरेंस ऑफ हिज टीचर ऑलवेज कीप्स सोक्रेटिस एज द सेंट्रल कैरेक्टर. ओके, कल आपको सुबह एरिस्टोटल पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि प्लेटो और एरिस्टोटल में क्या दो मेजर डिफरेंसेस. एरिस्टोटल भी सोक्रेटिस की तरह he was going to be killed by the ruler. Aristotle said कि I am not going to offer my neck for truth.
Socrates has always done that, and the world is less wiser. He said the world needs people like Socrates and people like me. अगर हम लोग ही ऐसे बेवकूफ रूलर्स के सामने मर जाएंगे, तो then the world will be at loss, and therefore he escapes. वो भाग जाते हैं, ना कि ट्रूथ को डिफेंड करते हैं, अपनी जान बचाते हैं. So we will discuss about Aristotle tomorrow in the morning, that how pragmatic, how practical thinker he is, and how he continued the legacy of Socrates and Plato even after criticizing them. Okay. तो जैसे प्लेटो आप देखेंगे कि एक फेल्ड फिलोसोफर है in one sense. He could never actually bring the philosophical king, but Aristotle was a very successful philosopher in that context, because एरिस्टोटल ने किस राजा को ट्यूटर किया था? He was the tutor of Alexander. Yes, Alexander, the king who won the world. So Aristotle was therefore a very successful philosopher, both in theory as well as in practice. And not only Aristotle, not only Alexander, Ptolemy भी है, और भी कई लोग थे जो उनके शिष्य जो बाद में बन के जाके राजा बने. Anyways, so प्लेटो जो है पार्मेनाइडिस और सोक्रेटिस के कॉन्वर्सेशन में, पार्मेनाइडिस सोक्रेटिस से पूछते हैं, बिकॉज सोक्रेटिस इज एक्चुअली प्लेटोस पॉइंट ऑफ व्यू. तो पार्मेनाइडिस पूछते हैं कि डज एन आइडिया पार्टिसिपेट इन होल और पार्ट्स. उनका सवाल ये है कि ये जो मैनलीनेस है, इज इट प्रेजेंट इंटायरली इन विकास एंड राम और इन पार्ट्स? अगर इंटायरली विकास में हो जाएगा, सो इज इट पॉसिबल दैट मैनलीनेस विल बी प्रेजेंट इन राम? यस, yes or no? If the idea of manliness entirely participates in the particular vikas, can it participate in anything else? No. No. If it participates in parts, so can I say that the idea gets divided? थोड़ा सा विकास को मिल गया, थोड़ा सा राम को मिल गया. Yes. And will that be logical to say that one idea is getting divided? Yes. तो दोनों में ही यहां पर समस्या आएगी. The idea either gets divided, or if it gets in whole, it will be limited to that particular only. ये पहली प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम क्या है? थर्ड मैन फैलेसी. थर्ड मैन फैलेसी क्या है? जॉर्ज, बैरक एंड हिल, ये तीनों आपस में कैसे लिंक्ड है? बिकॉज all three are human, but this human is linked to the idea of humanness. So now this humanness will be linked by another idea. So जॉर्ज, बैरक और हिल, इनमें आपस में जब हमको रिलेशन करना था तो एक थर्ड मैन आया. Now between George, Barak, Hill and human, we needed another third man, humanness. So now humanness would require another idea for its justification to these. So this is called third man fallacy. Third man fallacy क्यों है? Because it will continue till infinite regress. किन्हीं दो चीजों के बीच में अगर किसी तीसरी चीज से रिलेशन है, तो उस तीसरी चीज, दैट थर्ड थिंग विल आल्सो स्टैंड इन क्वेश्चन ऑफ वांटिंग इट्स ओन रिलेशन. जॉर्ज, बैरक, हिल आपस में कैसे रिलेटेड है? क्योंकि वो ह्यूमन है. बट जॉर्ज, बैरक, हिल और ह्यूमन, इनके बीच में क्या रिलेशन है? ह्यूमननेस का. ह्यूमन और ह्यूमननेस के बीच में क्या रिलेशन होगा? देयर विल बी अनदर आइडिया.
Okay, so this is called third man fallacy which Plato himself predicted. तो ये दो criticisms हैं जो Plato खुद foresee कर रहे हैं. Then some of them are by Aristotle. Aristotle is predicting some of the criticisms. First, criticism of Platonian ideas. So प्लेटो के आइडियाज के बारे में ये कहते हैं कि ये जो आइडियाज आप कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल हैं एंड दे आर एग्जिस्टिंग सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट, कहते ये जो है ये हॉलो बात हो गई. अगर आपको ब्यूटी की बात करनी है, द आइडिया ऑफ ब्यूटी, सो द आइडिया ऑफ ब्यूटी कैन ओनली बी पॉसिबल by being in beautiful things. It is only possible to understand the idea of beauty when you see it in beautiful things. वरना abstract beauty का क्या मतलब है? Abhishek, if I ask you what is beauty, what will you say? Yes. So beauty can be it can be conceived as an idea of beautiful things. नहीं, मैं जैसे आपको बोलूं टेल मी अबाउट ब्यूटी, क्या कहेंगे आप? Sir, then I will describe a beautiful thing or anything. You will describe, like if I ask you tell me about Katrina Kaif, when will you be more comfortable in the description? When I ask you to define to describe the idea of beauty or idea of Katrina Kaif? The second one. Second one. Your parents are sitting with you? No, sir. Okay. That is why you are not taking Katrina Kaif's name. There was one student of mine. This I am just telling this to lighten your mood. And मतलब क्लियर और नॉट क्लियर मैं दोनों को एक तरीके से देखता हूँ भाई, कि हमको अगर ये एग्जाम आगे देना है तो हमको पूरी मेहनत करनी है. आप में से बहुत सारे लोग अभी जो क्लास में बैठे हैं वो लोग क्लियर भी कर रहे हैं, बट आई ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पीपल जिनका नहीं हुआ एंड आई नो कि उनको करना चाहिए. ओके, सो one of my students, he was also a painter, so he happened to live near the institute only. Our like we had a had kya hai, abhi bhi hai, it is now an administrative center because all of us are taking the online class. तो हमारे जो उस समय तो ऑफलाइन सेंटर भी था, तो हम क्या करते थे कि बच्चों की मेंटरशिप 1-to-1 बुला के करते थे उस समय, कि आप आइए, हम यहाँ पर हैं इतने बजे से इतने बजे तक, आके अपने डाउट्स पूछिए. सो ही वन सेड कि सर मैं ऐसे ये आपके घर के बगल में रहता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम फॉर कप ऑफ टी एक्सेट्रा समथिंग लाइक दैट. तो आई सेड ओके, आई विल कम someday. And then it just happened that I went there. So he had put a eye of some, I forgot what was the name of that actress. So I asked him that ये आपने क्यों फोटो लगा रखी है, इनकी सिर्फ आंख की कौन है ये? तो उन्होंने बताया कि ये फला फला एक्ट्रेस है. मैंने क्यों लगाया? कहते कि मुझे इनसे, इनकी आंखों को देख के, इनकी आंखों को खूबसूरती को देख के मोटिवेशन मिलता है. मैंने कहा यार पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आंखों की खूबसूरती से मेंटर तुमको कैसा मोटिवेशन मिलता है? now he is in these services, but such are the kind of weird stories through of philosophy people. And now it made no logical sense to have an actress's eyes only. I said if you want to put her whole picture at least. So he said that is of no use in my preparation. So that time I realized that either he will be a ओशो लाइक फिलोसोफर या फिर ये एग्जाम क्लियर कर जाएगा अगर इतनी इसको कुछ बातें जो हैं इसको समझ आ रही हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. बट आई वाज लिटिल स्केप्टिकल that day that he has gone crazy. However,
you have to find your own craziness in this field. हम क्या करते हैं, एक बस भेड़ चाल की तरह पढ़ना पढ़ना पढ़ना. Develop that craziness, that if I am going to study, suppose today Plato, किसी सड़क चलते हुए व्यक्ति के भी, एक रिक्शे वाले के भी पास अगर मुझे प्लेटो समझाना पड़े तो मैं कैसे समझाऊंगा. You should have that kind of finesse while studying for UPSC, not just simply कि बस किसी तरह से आंसर लिख दे, किसी तरह से गोला लगा दे. That may not be the hallmark of a very good candidate. Okay, on the downside you may become a teacher, that is the downside. But anyways, प्लेटो ने बोला कि भाई कैसे संभव है to have this abstract ideas, इनका knowledge भी कैसे संभव है. Can I get knowledge of beauty without looking at beautiful things? Yes. Even if suppose there is a very famous painter, for example, like नंदलाल बोस मान लीजिए, बहुत अच्छे पेंटर हैं, या फिर लेट अस कंसिडर दा विंची, तो उनको भी ब्यूटी क्या अपने दिमाग से उन्होंने उपज की, या डिड ही सीक ब्यूटी इन द क्रिएशंस ऑफ द वर्ल्ड, इन ब्यूटीफुल थिंग्स? Sir, he was inspired by world. Yes, he was inspired. So therefore प्लेटो को यही बात कह रहा है एरिस्टोटल की भाई जो चीज आप देख नहीं सकते, जो चीज आप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसकी आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, हाउ कैन वी कंसिडर दैट टू बी इन एनी लॉजिकल सेंस एन आइडिया ऑफ सब्सटेंस? ऐसा सब्सटेंस आप क्यों मान रहे हैं? ऐसी सब्सटेंस नहीं हो सकती. ओके, ही सेड आइडिया शुड बी हैविंग यूनिवर्सल, it should have quality or relation, not idea. A substance should have a universal or common and essential characteristic. It should have a quality or relation, and third, it should have an unknown substratum called matter. ये तीन चीजें मिला के सब्सटेंस बनता है, जिसको कि एरिस्टोटल कहते हैं फॉर्म्ड मैटर और कॉन्क्रीट आइडिया. He says you are right about idea, that it is common and essential characteristic, it is the archetype, it is universal, it is eternal, all that is correct, but it itself alone is not a substance unless and until this idea is found in particular things, it has no meaning. Okay, so Plato's ideas existing apart from the individual is simply a fiction. Okay, this was his criticism of the Platonian ideas. Next, he criticizes Plato's theory of ideas. ये कहते हैं कि आपकी थ्योरी ऑफ आइडियाज में वर्ल्ड को लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया. द वर्ल्ड इज नॉट एक्सप्लेन्ड लॉजिकली. ये कहना कि वी आर मियरली कॉपीज, फोटोकॉपी हैं हम, या हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं आइडियाज में, या हम इमिटेट कर रहे हैं आइडियाज में, this is not the way to rehabilitate the reality of the world. ये एक अच्छा मेथड नहीं है वर्ल्ड की रियलिटी को रिहेबिलिटेट करने का, या वर्ल्ड की रियलिटी को एक रिस्पेक्ट देने का. आप ये यू आर सिंपली एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड अवे. By calling the world an appearance, it is simply explaining the world away, which any philosopher will not be accepting it. Plus, वर्ल्ड और आइडियाज के बीच में रिलेशन भी नहीं बन पा रहा है. आइडियाज क्या है? परमानेंट और चेंजिंग. Permanent. They are permanent, they are eternal, they are immutable, whereas world, it is changing, it is a flux. So how can there be a relation between these two things? Only like can be alike, can be like.
only between two similar things there can be a relation. ब्लैक और व्हाइट के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? यस, No, sir. करेक्ट. हाँ यार, both are colors, right? Okay, black orange नहीं, black board and white cloth, is there any relation? I asked this in one of the classes. The student said yes, both are made of matter. So the idea basically is that there can be relation only between things which are similar in character. Ideas and world, they are not similar. So therefore, this relation also cannot be explained logically. Okay, but हम conclusion में क्या लिखेंगे? Despite all the flaws, Plato's theory of ideas do not become redundant. And even Aristotle himself had to take recourse. Aristotle जब खुद अपना theory of potentiality और actuality सिखाएंगे तो उसमें ये सबसे नीचे यहाँ पर formless matter की बात करते हैं at the base, और ये change होता रहता है, और at the top there is pure form or actus purus. So therefore Aristotle himself had to take recourse of pure form, actus purus, in his philosophy while explaining change in his philosophy of potentiality and actuality. So therefore we will say that, as rightly pointed out by Moorhead, entire Western philosophy is the footnotes of Plato. That even holds true for Aristotelian philosophy. Is this clear? Yes. Vikash? Yes. Yes. Now finally, अगर क्वेश्चन है what is significance of Aristotle's philosophy, या फिर आपको वैसे significance लिखना हो, so you basically have to write the 5 interpretations of Plato's theory of ideas, जिसमें से 3 इंटरप्रिटेशन जो है just a second, 3 interpretations are given by Zeller, and 2 interpretations are given by another thinker, that is W.T. Stace. So Zeller देते हैं 3 interpretations and W.T. Stace gives 2 interpretations. एक बार इसको हम सीधे अपने डॉक्यूमेंट से देख लेते हैं, and then we will revise theory of ideas in 5 minutes, entire theory of ideas. Is this visible? Yes, sir. ये बताइए विजिबल है? Interpretation Yes. of Plato's. Yes. So Zeller has interpreted Plato's theory of ideas from 3 point of view. Ontological point of view. Ontological comes from the word ontos, meaning essence. So from ultimate reality perspective, ideas are the ultimate reality, and they have their real existence and not mental construction. His philosophy is a realistic idealism, not subjective idealism. That is the difference between him and Berkeley. Realistic idealism, not subjective idealism. Second, from logical point of view,
लॉजिक के पर्सपेक्टिव से आइडियाज आर यूनिवर्सल एंड नॉट पर्टिकुलर. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द इम्परमानेंस ऑफ द सेंसिबल वर्ल्ड. अब आप अगर अल्टीमेट रियलिटी कोई बना रहे हैं, शुड अल्टीमेट रियलिटी बी एटर्नल अनचेंजेबल और शुड इट बी चेंजेबल? आप किसको परम सत्य मानेंगे? वो चीज जो हमेशा नश्वर है, बार बार बदलते रहती है, या दैट थिंग विच इज शाश्वत, विच इज त्रिकाल बाधित, विच कैनॉट बी रिफ्यूटेड इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? किसको आप अल्टीमेट रियलिटी बनाना चाहेंगे? तो जो शाश्वत हो, इटर्नल. Yes, that which is eternal. Now that is why he has made ideas as universal. He has not made ideas as particular, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी की डेफिनेशन में वो फिर फिट नहीं बैठेगा. Then from axiological comes from the concept of liberation, soteriological, कि पर्पस क्या है? आइडिया ऑफ गुड इज द हाईएस्ट एम, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेटो. देखिए, प्लेटो की फिलोसफी का एक प्रिंसिपल था परफेक्शन ऑफ सोल. इंडियन फिलोसफी में क्या कोई बता पाएगा विच फिलोसफी टॉक्स अबाउट परफेक्शन ऑफ द सोल? They have dedicated their entire philosophy into perfecting the soul. Can anybody tell me? Yes. Kanchan? So can I guess? Yeah, yes, definitely. Nyaya philosophy maybe. Nyay. Nyay is more concerned about knowledge. Okay. Their allied school, that is वैशेषिक, is concerned about reality. न्याय पहले ये तय कर लेते हैं कि नॉलेज क्या है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर सही नॉलेज मिल गया तो यू विल बी लिबरेटेड, और ये लिबरेटेड वाला काम करा रही है वैशेषिक. So Vaisheshik will be discussing about Padarth. Any other guess? Anybody would Okay. like to guess? Sorry? Sir, yoga. Absolutely correct. Entire yoga philosophy is dedicated towards the perfection of the soul. Chitta vritti nirodh. That is to prevent the cessation of modification of chitta. ये जो चित्ता का मॉडिफिकेशन रोकेंगे तो सोल में मॉडिफिकेशन बंद हो जाएगा. देयर विल बी, सोल will come out of its so-called bondage stage. Entire yoga philosophy, yam, niyam, pranayam, pratyahar, dhyan, dharan, samadhi, that is designed for the perfection of the soul. Okay, so ontological perspective, logical perspective, axiological perspective, ये तीन इंटरप्रिटेशन दिए हैं जेलर ने. एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, अगेन सेम आइडिया, नॉलेज का बेस हमेशा फिक्स रहना चाहिए. अगर हमको नॉलेज में सर्टेनिटी चाहिए, सो इट्स फाउंडेशन शुड बी सर्टेन. 2 + 2 = 4. Was it true even 10 generations earlier? Even in our great grandfathers, was 2 + 2 = 4 a true reality? Yeah. Yes. So why? Because it is based on reason. It is not based on empiricism. So फॉर नॉलेज टू बी सर्टेन, उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, वो भी परमानेंट होना चाहिए, वो बदलते नहीं रहना चाहिए. ये बिगेस्ट क्रिटिसिज्म हम देखेंगे इंडियन स्कूल में, विच विल बी फेस्ड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स. व्हेन दे विल टॉक अबाउट क्षणिकवाद, क्षणभंगवाद, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करने में और नॉलेज को एक्सप्लेन करने में, मेमोरी को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि उनके हिसाब से तो सब कुछ क्षणभंग में बदल गया है. So they will have a lot of difficulty in explaining the base for knowledge, base for identity. Okay, and then mystical perspective bhi hai ek, in Plato's philosophy, ideas exist in the world of heaven. Idea of good attracts all towards it. A mere glimpse of the idea of good leads to liberation. थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना इंडियन फिलोसफी जैसी बात. एक बार बस आपको आइडिया ऑफ गुड दिख गया तो आप लिबरेट हो जाएंगे. Yes.
समथिंग लाइक अ मियर ग्लिम्स ऑफ द डेटी। एक बार आपको जो है भक्ति मार्ग में एक बार आपको कृपा हो गई, यू विल बी लिबरेटेड। सो ही हैज soteriological ends to his philosophy, much like Plato. Is it clear? Yeah. Okay. तो अगर ये सवाल आ जाए कि इंटायर वेस्टर्न फिलोसफी इज फुटनोट्स ऑफ प्लेटो, तब भी आप ये लिखेंगे व्हाट इज प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज, एंड इफ द क्वेश्चन इज ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटो, तब भी हम यही सवाल लिखेंगे। ओके, सो इज इट क्लियर टिल हियर? यस नो? Yes, sir. सो एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई ही गेव? So he gave theory of ideas to harmonize Parmenides and Heraclitus. नॉलेज को एक साउंड बेसिस देने के लिए। मेटाफिजिकल रीजन क्या है? टू एक्सप्लेन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अल्टीमेट रियलिटी। Then next is what is ideas? They are ultimate reality. They are substance in itself, for itself. They are eternal archetypes. They are realistic idealism because these ideas exist separate and independent in the kingdom of ideas. Then we studied about the features. These ideas are universal, eternal and immutable. Ideas are one and many. Hierarchical, सबसे ऊपर idea of good है, they are known by reason. Then arguments, arguments for and arguments against. तो for में definite knowledge से दिया है, argument of one over many, argument from relation, knowledge of things that are no more. Allegory of cave is also an argument. उसके थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं the difference between reality and appearance. Then criticism, Aristotle and Plato's own criticism, it cannot be a substance. Beauty cannot but be in beautiful things. Theory of ideas में it cannot explain the world logically. Idea participates in parts or whole. Third man fallacy, cannot explain diversity and change. And then the interpretations, Zeller ने 3 interpretation दिए, ontological, axiological, logical, और W.T. Stace ने 2 दिया, mystical और epistemological. So that is the entire revision of Plato's theory of ideas. Any doubt in this, please ask, because 99% questions will be coming from, if it comes from Plato, will be from Plato's theory of ideas. Yes? Yes, no? Clear? Yes. Okay, so let us now discuss Plato's epistemology. प्लेटो का मेटाफिजिक्स हमने कर लिया, प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी करते हैं। Now, in Plato's epistemology, there are two things. एक तो ये जो पुरानी थ्योरी ऑफ नॉलेज है, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। किसको डिस्ट्रॉय करेंगे? दो चीजों को। नॉलेज इज परसेप्शन। एक तो प्लेटो आर्ग्यूमेंट देंगे इस बात को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नॉलेज इज ओपिनियन, इसको भी प्लेटो डिस्ट्रॉय करेंगे। इन दो बातों को डिस्ट्रॉय करके ये फिर अपनी प्लेटोस epistemology. Plato will be then propounding his own philosophy. And what is his own philosophy? That is theory of divided line. Okay, so पहला हम समझते हैं knowledge is not perception.
नॉलेज इज नॉट ओपिनियन, ये प्लेटो साबित करेंगे। विकास, द सन राइजेस फ्रॉम East. You see it also rising from the east, but does it actually rise from the east? No, sir. It is actually the Earth rotating toward the West. Sorry. I said no. It is actually the Earth which is Yes, rotating toward Earth is rotating from west to east. So even when we are seeing this perceptual information, this common sense information, this is false. So perception gives us many times wrong information. Perception may not be a valid or reliable source of information. शैव्या, if you go out, क्या अगर आप ऐसे अपने दोनों उंगलियां करेंगी, would you not be able to cover the entire sun between your two fingers? Yes. But Yes, sir. what is the size of the sun? It is 109 times the size of Earth. We are Earth. simply seeing it that much small because we are seeing it from a distance, right? Yes, sir. So because we are seeing from the distance, it looks small. If we increase the distance, if we go near it, we will see how huge it is. So Yes, sir. perception always is giving wrong information. Perception की वजह से एक थ्योरी भी आ गई, होमो मेंसूरा, that is man is a measure of all things. ये भी बात सही नहीं है, man is a measure of all things. ये परसेप्शन से ही आया, क्योंकि आपको जो दिखता है आप उसी को सत्य मानते हैं। इसके हमने एग्जांपल्स देख लिए। अगर आप अपनी एक आंख बंद कर दें तो आपको दुनिया नहीं दिखेगी, एंड फ्रॉम वन आई यू आर सीइंग द वर्ल्ड. सो विच इज ट्रू, वर्ल्ड एग्जिस्ट और वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट? इफ यू हैव टू आईज and this eye is shut, so is the world existing or not existing? Existing. But according to this eye it is not existing, जो बंद है. Yes, very much like Schrodinger's cat, no? So therefore you cannot differentiate between truth and falsity on the basis of perception. ट्रूथ और falsity के बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. द परसेप्शन ऑफ अ मैडमैन versus perception of a dreamer versus perception of a healthy man, for the same thing, will the perception be different? Yes. 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 So A, there is no distinction between truth and falsity, and B, there will be self contradiction, जो कि हमको इस केस में दिख रहा है. If your one eye is shut and your one eye is open. Third, can we see things like equality, liberty, are they available to perception? Yes. No, sir. No, not available to perception. They are not available to perception. But do we believe in the concept of equality, the concept of liberty? Yes. Yes or no?
So while we are not able to perceive these things, but these things exist, this is one more argument why knowledge is not perception. So 3 argument ये देते हैं, difference between truth and falsity. Second, there is self contradiction. Third, words like this are not available to perception, but they still exist. Next is knowledge is not opinion. Knowledge opinion भी नहीं है. Even when the opinion is correct or right, it is still not a knowledge. Okay. Plato makes the distinction between knowledge and makes the distinction between opinion. Opinion may be right, opinion may be wrong, but opinion is always false. Only knowledge is true. It may be right also, it may be wrong also, but in both the cases, opinion is always false. जैसे आप कोई opinion बताइए. For some of you, UPSC is a beautiful exam. For some of you, today UPSC is a nightmare. जिनके लिए एक beautiful exam है, उनके लिए next stage is a nightmare because they have to work so hard. जिनके लिए आज nightmare है, next year when they will see their name in the final list, this view will change. So opinion, right or wrong, is always false. Knowledge is always true. You prepare for UPSC sincerely, you will do good in whatever sphere in life. You become a good lawyer, you become a good writer, you become a good YouTube influencer, you become a good mechanical engineer, you may become a good teacher, anything. If you are a good aspirant, you will be great at things that you do in life. That is true. Knowledge is based on reason. Opinion is based on perception, belief, etc. Then we can always have only knowledge of ideas, whereas opinion is of the world of things and beings. अब इन दोनों को क्रिटिसाइज करके फिर ये देते हैं एक थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन, और फिलोसोफर वही अच्छा माना जाता है who is able to harmonize their metaphysics and their epistemology. अपनी मेटाफिजिक्स को वो कर पाए, अपनी एपिस्टेमोलॉजी को कर पाए. Okay, so from the metaphysical perspective, he has put things in the theory of divided line. From the epistemological things perspective, he has put things on the divided line. देख लीजिए एक बार directly from the notes. So on one side there are objects, on the other side there are epistemic things. Episteme means that which is related to knowledge. तो एक साइड जो है मेटाफिजिक्स है, एक साइड जो है एपिस्टेमोलॉजी है. सबसे पहले हम चालू करेंगे वर्ल्ड ऑफ इमेजेस से. शैडो, पेंटिंग, स्कल्पचर्स. ये जो पेंटिंग है, प्लेटो सेड इट इज ट्वाइस डिवोर्स्ड फ्रॉम रियलिटी. कैसे भाई? एक तो क्या है, आप हैं, प्लेटो के हिसाब से आप नकली हैं, यू आर अ फोटोकॉपी, और आपने अपनी पेंटिंग बनवा ली, तो ये पेंटिंग क्या हो जाएगा? ट्वाइस डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी. सो इट इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ रियलिटी, वर्ल्ड ऑफ इमेजेस. इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आप रियलिटी में जाएंगे तो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ये जो स्टेज 1 ऑफ नकली चीजें हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस. और जब हाईएस्ट आप जाएंगे, which is the ultimate reality from metaphysical perspective, it is the form or ideas. World of images जो है आपके imagination में होते हैं. World of object, it is based on your belief. और सबसे ऊपर world of ideas आपको वो reason से मिलता है, जिसको कि वो कहते हैं noesis. These are the
Greek terms, equinox, pistis, noesis, etc., dioma, they are the terms used by Plato. So on one side, there is the metaphysics. On the other side, there is the corresponding epistemology. He is able to explain his metaphysics through his epistemology, or is able to reconcile both of them. The world of ideas will be known through reason. Okay. So a visual representation of Plato's ontological and epistemological view of the universe is the theory of divided line. Okay. A reality is divided into two parts: universal ideas called intelligible realm and particular called visible realm. यहाँ पर एक intelligible realm है और एक visible realm. Okay. So that is your theory of divided line. Any doubt in this? If I were to ask you why he gave his theory of divided lines, Amita, what will be the answer? Yes. Shavya, why he gave theory of divided line? So to reconcile his metaphysics and epistemology. No, that is fine. But if you have refuted the two prevailing theories of knowledge, you have to substantiate your view with your own theory of knowledge. Yes, sir. Plato has refuted theory of divided line. Plato has refuted knowledge is perception. Plato has refuted knowledge is opinion. इन दोनों को जब आपने रिफ्यूट कर दिया, दो ही प्रिवेलिंग व्यूज थे नॉलेज के, उनको जब आपने रिफ्यूट कर दिया तो आपको अपना व्यू तो देना पड़ेगा ना. So we will say, after having successfully refuted the two prevailing theories of knowledge, that is knowledge is perception and knowledge is opinion, Plato propounds his own theory of knowledge, and through this he is able to reconcile his metaphysics and epistemology. What is theory of divided line? It is a visual representation of Plato's ontological and epistemological view of the universe. Is it clear? Yes. Rituraj? Vikash? Yes, sir. चलिए, तो now I don't actually, I had एक क्वेश्चन लिखवाना था आप लोगों को, but I am getting constantly calls from the students, and it is justified to be with them in their happiness also, and more so if there is some kind of grief. So I'll have to take these calls. एक आपको सवाल देते हैं, लिख के लाइएगा, कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, and we will continue with Aristotle. So just write question 1 and question 2. There is a red chair. How would Plato explain the statement with the use of his theory of forms? And second, what does Plato want to prove by his allegory of caves? ये दो सवाल लिख लीजिए अपनी कॉपी में. You have to write and bring it tomorrow in the morning at 7:30 a.m. Okay. Everybody without any lapse. There is a red chair. How would Plato explain this statement? And what does Plato want to prove by his allegory of cave? Okay. So see you all in the morning, and I'll speak to some of you just after this class. Okay. Plus, anybody wants to call at any stage today, tomorrow, 12 a.m., 1 p.m., 2 p.m., please feel free. I'm available. Thank you for your time and patience. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, everyone. Thank you.